Good morning, everyone. Hi, guys. I hope you guys have had enough time to sleep last night because the YouTube festival has started today and this is our first lecture for today. I know I never usually come this early in the morning, at least not on YouTube, but I figured why not? Yeah. Good morning. Okay, I realize most of you are not early birds. You guys are late wakers, so I get it. You probably watch this later, but let me begin. Hi, Ivanshi. Hello. Good morning. Kind of surprised to see see someone live. Hi. Chalo, theek hai, let's begin then. Good morning, Hardika. Hi. My name is Amit Surana and I have over 6 years of experience teaching quantitative aptitude and I've trained over 2 lakh students in doing so. Please join these 2 groups. These are on Telegram. That will keep you updated, keep you posted on any upcoming sessions and any notifications with respect to your MBA prep. Good morning, Kritika. And if you're planning on, hi Rishikesh, good morning. So if you're planning on seeing your face here on this poster next year, these are our toppers from CAT 2020 who have made it from Unacademy Plus. If you want yourselves to be here, all you have to do is pick up one of these CAT offerings that we have. And if you want to take up the subscription, then the plus subscription, these are the pricing. The iconic subscription, these are the pricing. I'll let you know what these subscriptions do towards the end of the session. If you use my code Surana Life, the prices will get slashed by 10%. Chalo, enough done. Shall we begin? Yes. So what the agenda for today? Let's quickly talk about the agenda for today, right? These are the types of series and our aim is to cover all of them, right? We'll be looking at what arithmetic progression is, how to find out the nth term, the sum of n terms, and how to deal with questions that talk about differences. Yes, that's with respect to arithmetic progression. We will also be looking at what arithmetic mean is, which we already have looked at, but we'll look at it again. Okay. Then we have geometric progression. Again, in the geometric progression, we'll be looking at nth terms, sum of n terms. In this case, not difference, but we'll be looking at the ratio. Yes, and we'll be looking at geometric mean. What geometric mean is and how could that be used in geometric progression. Yeah, we'll also be looking at a few problems that talk about product of some terms. Yes, then we have harmonic progression. Again, harmonic progression is a variant of arithmetic progression, so we'll be looking at what the nth term, how to find out the nth term. With harmonic progression, it's very difficult for us to find out the sum unless and until there's a predefined number of terms there, right? So sum is not possible, product is not really possible, right? So yeah, that's that. Got it? That's with harmonic progression. You probably just find out the nth term. And then there's a progression called Arithmetic-Geometric or Arithmetico-Geometric that basically is a combination of both arithmetic and geometric progression. Yeah, so we'll be looking at a few examples from here as well. This one is not very common, but we would still be covering some examples so that you understand what this is, right? So throughout the day, our aim is to cover all concepts. Then we'll be looking at a few examples, right?
If at all we leave off something, we'll be covering that later. Okay, that and practice will be done on special classes. Yes, practice will be on the special classes on the app. Okay, shall we begin then? Hi Dhruv, good morning. चालू करें फिर? Let's start with arithmetic progression, shall we? Yes बोल दो एक बार, फटाफट से yes बोल दो and we'll begin. Quick guys. Yes बोल दो and like कर दो वीडियो पे and we'll begin. Alright Ivanshi, super. Chalo, let's start with arithmetic progression. Let's talk about what arithmetic progression is and how it works. Okay. So let's say that the first term of an arithmetic progression is 3. Okay, and the second term is 4. Okay, let's say the second term is 8. Yes. Now what do you think will be the third term here? Anyone? What is the third term? I'm saying this is an arithmetic progression. First term is 3, second term is 8. What is our third term? Quick. 13. Beautiful. And then what will be our next term? 18. After that 23 and so on, right? So if I want to find out what is the 100th term here, right? If I want to find out what is the 100th term, 100, yes, how will I find that out? If I want the 100th term, how will I find that out? So what's happening? After every term I'm actually adding 5, correct? After every term I'm actually adding 5. The difference between these terms is what? 5. So the difference between first and second term is 5. How about the difference between first and third term? What is the difference between first and third term? Anyone? If the difference between first and second term is 5, second and third term is also 5, then first and third term the difference will be what? 2 times 5. Correct, 10. Hi Hema, good morning. Aajao jaldi, we're just getting started. Difference between first and fourth term, what would that be? Plus 3 times 5, correct? So what's happening? If I want the second term, then I'm basically adding 1 times 5. If I want the third term, I'm adding 2 times 5. Fourth term, 3 times 5. So if I want the 100th term, what should I be doing? I should be taking 3, that is the first term, and adding how many times 5? 100 times? Will this be 100 times, guys? Is it 100 times 5? Guys, anyone? Is this correct? Not 100, 99, because we are looking at the gap there. How much is the gap? Yes, so this would be how much? 498. Yes, got it. So what is our 100th term? So if you're looking at the 100th term, then it is 498. In this case, can you find out the nth term? Whatever I replace n with, will you be able to find that term out? Definitely. How? Your nth term would be what? Your first term plus n times your common difference. Yes, but this will give us what? N plus 1. So what would you have to do? Go one number less, right? So n minus 1 times the common difference. Clear? So don't consider this as a formula guys. I don't want you to remember it as a formula per se, but I want you to remember the logic behind it as well. इसीलिए मैं इतना लंबा चौड़ा explanation दे रहा हूँ. ठीक है? This is for you to find the nth term. Got it? Hi Kajal, good morning. Done? Any questions here, anyone? Kajal, Rishikesh, Hardika, Ivanshi, Hema, Dhruv, किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े.
So we've figured out what is the nth term. Now let's go for the sum of the terms, right? Let's look at sum of the terms. For sum, let's go back in memory. Let's look at the average, right? What is average? Average is nothing but sum of n terms by number of terms, correct? Yes, average is what? Average is sum of n terms by number of terms. Yes. Hi Shivraj, good morning Ayush. मेरा प्लान 6 बजे रखने का था. My plan was actually to keep it at 6. क्या ही कर लोगे सो के. चलो. So we know that the average of a term in series is basically sum of n terms by n. So from here, can I find out what is the sum of n terms? Sum of n terms is nothing but average into n, correct? Average into n. Now my question to you is, what is the average of a series of terms in AP? For example, if I have 1, 2 and 3. Yes, what is the average here? What is the average here? 1, 2 and 3. The average is what? 2, correct? How did we come to this? How did we come to this? Because in an AP, please remember, in an AP, your arithmetic mean is the same as your median, correct? Arithmetic mean is the same as the median, and median क्या है? Middle term, correct? तो इसमें अपन middle term कैसे ढूंढेंगे? We can do it by adding the first and the last term, correct? Add first last term 1 plus 3 and divided by 2. So first term last term by 2 would give us the middle term, correct? The arithmetic mean of two extreme terms will give you your average. Yes, so sum of n terms is basically what? First term plus last term by 2 multiplied with what? N. Got it? First term plus last term by 2 multiplied by n. Clear? तो इससे अपन वो वाला formula, let's say we don't know the last term, we know the first term, we know the common difference, we know the number of terms, but we don't know the last term. तो फिर यहाँ पे an की जगह nth term की जगह क्या करोगे? वो वाला formula लगा दो. So sum of n terms is what? A plus nth term of a is what? A plus n minus 1 into d. Right, this is whole divided by 2 multiplied by n. इसी को अपन वापस अगर लिखेंगे अच्छे से तो what would it give you? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Clear? ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ गाइस, दिस इज नॉट फॉर्मूला मेरे हिसाब से, राइट? ये अगर आपको याद रहा तो ठीक, अगर याद नहीं रहा तो फटाफट से बैठ के डिराइव कर लो, बिकॉज एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना ही बनना है. यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड इफ यू कांट रिमेंबर सो मेनी फॉर्मूला, इट्स ओके, अंडरस्टैंड द लॉजिक फॉर इट एंड फिर उसको वहीं पे बैठ के डिराइव कर लेंगे. क्लियर है? हो गया ना? इसमें कोई क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, किसी को कुछ भी नहीं है ना? तो अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली सम ऑफ द टर्म्स a plus b plus c plus all the way till n, sum of the terms by number of terms, है ना? by number of terms. Clear? तो चलो इसके बारे में और बात करेंगे आगे. एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत देर से थियरी कर रहे हैं. हियर्स अ क्वेश्चन, क्विकली ट्राई दिस आउट. जल्दी से ट्राई करो ये वाला.
11 डिग्री हो रहा अभी। चेन्नई में मेरे को यहाँ पे सुबह सुबह में पसीने छूट रहे। यहाँ गर्मी है सवेरे में भी। आ जाओ। चलो फटाफट से ट्राई करो। हाय गाइस, पीपल हु जॉइन नाउ, हेलो गुड मॉर्निंग। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। ऑलराइट, आयुष सेज 5। जल्दी करो गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, 3 मिनट सिर्फ नाम के लिए दिया है, जरूरी नहीं है पूरा 3 मिनट वेट करो और फिर आंसर करो। गुड मॉर्निंग मेहर, गुड मॉर्निंग। Ivanshi also says 5, superb. Others? Good morning Shashank. Hey man, good morning. चलो let's do this then. करेंगे ये वाला क्वेश्चन। हेमा को 4 आ रहा, हार्दिका को 5 आ रहा है। चलो ठीक है, so we have 4 or 5, 2 answer choices. So first let's do it in the traditional way, standard formula लगा के, right? We know the first term a is what, -7.2. We know the last term an is what, 7.2. With this I want to find out what n is, but for that I need d का value. d is what, -7.2 -3.6, right? So minus of -3.6. दो आजू बाजू के टर्म का मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सो दिस बिकम्स व्हाट, -3.6. सो योर कॉमन डिफरेंस d इज -3.6. दैट बीइंग सेड, कैन आई फाइंड आउट व्हाट द nth टर्म इज? nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d, करेक्ट? तो लास्ट टर्म क्या है, 7.2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -7.2 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, वही ढूंढना है। d इज व्हाट, -3.6. यस, तो अब इसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 14.4. सो n-1 इज इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाय -3.6, करेक्ट? यस, तो ये कितना हो गया, 12 टाइम्स, तो दिस इज 4 टाइम्स, राइट? सो दिस इज 1, दिस इज -4. कुछ गड़बड़ है क्या इधर? सॉरी गाइस, सॉरी, ये गलत लिख लिया आपने, ये गलत है गाइस। इट्स नॉट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ची, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये ऐसे जाएगा, ऐसे डिफरेंस निकालेंगे, फालतू में फंस गए। -3.6 माइनस ऑफ -7.2, सो इट इज व्हाट, +3.6 ओनली, नॉट माइनस। प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस है। तो व्हाट डू वी गेट, n-1 इज इक्वल टू 4. सो इफ n-1 इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज n? 5. यस, ये हो गया आपके स्टैंडर्ड मेथड से, राइट? 5. बट वी ऑल नो दैट स्टैंडर्ड मेथड में नॉट वर्क ऑल द टाइम। या इतना लंबा कौन करता है ना, इतना लंबा कौन करता है? तो लेट्स क्विकली लुक एट अ शॉर्टकट हियर, let's quickly look at a shortcut. Yes, see, we know that here there is a difference of 3.6. Yes, that is getting added, 3.6 is getting added. तो ऐसे वाले में आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, -7.2 -3.6 फिर 0 फिर 3.6 प्लस फिर 7.2, ऐसे में पता चल गया कि 5 टर्म्स है, राइट? otherwise what you can do is from the middle, from the number line, लेफ्ट में देखो कितने टर्म्स है, राइट में देखो कितने टर्म्स है। यस, लेफ्ट में कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स,
राइट में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स, जिसको मिला के 5 टर्म्स हो गए. Getting it? So you can do this by logic also. Yes, can definitely do it with logic. ठीक है? Any questions here, confusions, anyone? और even this, इसका एवरेज क्या होगा? इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन 0 है. यस, क्यों अरिथमेटिक मीन 0 है? क्योंकि इसका सम ऑफ n टर्म्स, सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा. अरिथमेटिक मीन 0 है, सम 0 है. all you basically need to find out is the number of terms in between that, right, which is how many? 5 terms. cool. तो ये लॉजिक से भी हो जाएगा. शॉर्टकट नहीं है, बट ये लॉजिक है. ओके, चलो करेंगे नेक्स्ट. फिर shall we go on to the next question? try this जल्दी से, quickly try this. Superb. Ivanshi says A. बाकी लोग? How about others? Ayush says A. Beautiful. ये उससे भी इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले से भी इजी क्वेश्चन. सुपर भारतिका, वेरी गुड. हेमा, अदर्स? चलो, लेट्स क्विकली लुक एट दिस. बहुत ही इजी क्वेश्चन. व्हाट्स हैपनिंग हियर? सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 42. Second term of an AP is 42. Yes, they're saying difference between two consecutive terms is 21. Difference is 21. That means the first term should be what? 42 minus 21, which is 21 itself. Yes. So अपना first term क्या है? 21. Second term 42 है. What are they saying? Nth term is 420. तो अपने को ढूंढना है ये कौन सा टर्म होगा. यस, बाय लॉजिक यू नो व्हाट इज दिस. दिस इज 21 into 1. दिस इज 21 into 2. व्हाट इज दिस? 21 into 20. तो दिस इज योर 20th टर्म. खत्म. या बाय लॉजिक. बाय फॉर्मूला अगेन, nth टर्म इज व्हाट? फर्स्ट टर्म n minus 1 into d. we need n का वैल्यू. यस, so this is 420 minus 21 by 21 is equal to n minus 1. You will get how much? 420 minus 21 is 399 by 21 is n minus 1. So n minus 1 is equal to 19. n is equal to 20. This is using your formula, right? Standard method. Done? चलो, ब्यूटीफुल गाइस, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी.
Quickly try this. Answers, anyone? Okay, Hardika says 544. Others? Any more answers, guys? Last 30 seconds. No more answers? Hema says 544. Okay. Alright, so let's do this in the standard way first. पूरा नहीं करूँगा मैं. I'll show you how the standard way could be troublesome here, but sometimes you might have to use it. ठीक है, standard way में करेंगे. A8. What is 8? Eighth term? Eighth term is basically A plus 7 times D, correct? First term plus 7 times the difference, which is how much? 28. What is 8? Sorry, which is what? क्या कर रहा हूँ? हाँ, A8 is 28. Third term is what? First term plus 2 times the difference, which is how much? 8. If I subtract them, 8th term minus 3rd term, what do I get? Your A's get cancelled. 7 minus 2, 5 times D, which is equal to 20. Yes. So have you noticed here what happened? देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे. इफ यू हैव ए n1 का वैल्यू, यस, एंड ए n2 का वैल्यू, n1 n2 कुछ भी हो सकता है, राइट? देन द डिफरेंस बिटवीन ए n1 एंड ए n2 विल बेसिकली बी n1 माइनस n2 ऑफ द कॉमन डिफरेंस. जैसे कि ये निकला, समझ गए? So what do you get here? You get that the common difference D is nothing but 4. Yes. तो अब आपके पास क्या है? You have A. Can you find A from here? A आप ढूंढ सकते हो ना? A will be what? Using this, A will become what? A plus 2 times 4. Yes. A क्या पूछ रहे हो शिवराज? A plus 2 times 4 is 8. So what is A? Your first term is basically 0. Got it? So you have your first term A, 0. You have the number of terms 17. You have the common difference 4. Can you find out sum of 17 terms? Definitely. How? 17 by 2, n by 2 into 2 times A, which is 0, plus n minus 1, which is 17 minus 1 times D. Correct? तो ये 0 तो हो गया cancel. This is twice. This is 16 2 times 32 into 17. Yeah, this will give us the sum. Okay, 32 times 17, which is how much? 320 plus. So this is supposed to end with a 4. This has to be our answer. Correct? 544. But this is what? This is your standard way of doing it. ये बहुत time consuming भी है और standard way of doing it, right? Let's look at a quick shortcut, and this applies only for questions where, look at this. यहाँ पे in this entire thing,
व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? यहाँ पे मीडियन क्या होगा पहले ये बताओ, अरिथमेटिक मीन जाओ पहले बताओ मीडियन क्या हो गया? A1 A2 A3 A17 है, इसका मीडियन क्या होगा? व्हाट इज द मीडियन? A9, करेक्ट, एग्रीड, A9। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में 8 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट हैंड साइड में 8 टर्म्स है, 10 11 12 13 14 15 16 17। बीच में क्या है? 9th टर्म। यस, और 17 + 1/2। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो n + 1/2 विल गिव यू योर मीडियन A9। अपने पास A8 ऑलरेडी है, वी ऑलरेडी हैव व्हाट A8 इज, व्हिच इज 28। यस, ऑल वी वांट इज A9। कैसे ढूंढेंगे A9? फ्रॉम हियर, for us to find A9 all I have to do is add 1 D। D क्या है? 4, so 28 + 4 32। yes, I know that sum of n terms is basically equal to arithmetic mean into number of terms। ये क्या हो गया? this is nothing but your arithmetic mean, है ना? मीडियन और arithmetic mean सेम रहता, मीडियन और arithmetic mean सेम रहता, तो सम इज व्हाट? अरिथमेटिक मीन इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अरिथमेटिक मीन 32, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 17। खत्म। यस, यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, ये सब एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। इफ यू यूज अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिक, दैट्स इट। ठीक है, 544 इज योर आंसर। कूल, समझ गए ना एवरीबॉडी? नो कंफ्यूजन्स आई होप। चलेंगे नेक्स्ट। चलो फटाफट से ये ट्राई करो गाइस। अगर लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को तो कर लेना, ठीक है? जल्दी, ये बहुत ही सिंपल, क्विक करो गाइस, जल्दी। Very simple question. Dushyant says B. $998. Okay, others? Sumit says B, Shivraj says D, Ayush says C. लास्ट मिनट, 1 मिनट है, जल्दी करो ट्राई। हार्दिका says D, वैष्णवी says B। ओके, चलो ठीक है, फट से देखते हैं क्या है अपने पास। वी हैव 22nd टर्म विच इज 67, वी हैव 4th टर्म विच इज 13। मेरे को पता है अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 18 टाइम्स D, 22 - 4, 18 टाइम्स D इज इक्वल टू 54। तो इससे मेरे को क्या मिल गया? D इज इक्वल टू 3। यस, इससे मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। कैन आई फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म? डेफिनेटली। कैसे? A4 13 है, A4 इज नथिंग बट A +
3 times d, yes, which is equal to 13. तो a का वैल्यू क्या हो गया? 13 minus 3 times 3, 4. Got it? Yes. अभी अपने पास क्या है? We have first term, we have common difference, we have number of terms. सम निकालने में कोई प्रॉब्लम रहेगा? नहीं रहेगा. तो फटाफट से सम निकाल लो. What is sum of n terms? n by 2, which is 25 by 2, into 2 times a, 8, plus n minus 1, which is 24, times 3. Yes, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा. So this is 36 plus 4, 40. 25 into 40 is how much? 1000. Got it? Yes. Any questions, confusions here, guys? किसी को? Yeah. This is your standard way of doing it. अब shortcut देखो, logic देखो. Yes, look at the logic. D क्या है? Integer है. Yes, your D is an integer. A is an integer, positive integer. Yes. So if A is your integer, D is your integer, मतलब arithmetic mean क्या होगा? Your arithmetic mean will also become an integer. Yes or no? क्यों arithmetic mean भी integer रहेगा? क्योंकि there are odd number of terms. There are odd number of terms, मतलब इसके बीच में, which is what? A13. A13 is your middle term, है ना? Median. A13 is your median, correct? 12 on the left, 12 on the right, middle में 13. Yes. So A अगर integer है, D अगर integer है, तो A13 भी क्या होगा? Integer ही होगा. A13 is nothing but your arithmetic mean. तो अगर arithmetic mean एक integer है, we know sum is equal to arithmetic mean into number of terms, है ना? So if arithmetic mean is an integer, अपन को पता है सब integer add करने पे ये भी एक integer ही निकलेगा, और n क्या है यहाँ पे? 25. So what is understood? It's understood that our sum, अपना sum should be a multiple of 25. खत्म. Our sum should be a multiple of 25. समझ रहे हैं आप लोग ये? Are you guys understanding this? Yes, no? कुछ तो बोलो, हाँ ना, आया नहीं आया, something. Only number that is a multiple of 25 here is what? 1000. That's it. Khatam. Question. So 998, 999 जिनने भी बोला, क्लियर है? अच्छा, फटाफट से देखो, इसमें से अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. A13 अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्या? इससे डायरेक्टली A13 निकाल लो, आपके पास एवरेज रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो, खत्म. यस, सो लुक एट दिस. A22 is 67. या ठीक है. A4 is 13, D is 3, A13 क्या हो जाएगा? A4 plus how many times D? 9 times D, which is 27. 13 plus 27, 40. आपका अरिथमेटिक मीन क्या हो गया? 40. सो 40 into 25,000. खत्म. डन ना? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मत सोचो इस पे. यस, क्विकली ट्राई दिस. इसमें से सिर्फ ट्राई छोड़ो, जाने दो, ये बाद में कर लेना, आप लोग होमवर्क कर लेना. डू दिस लेटर. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बाद में कर लेना आप लोग. चलेंगे नेक्स्ट. चलो, नाउ ट्राई द फर्स्ट वन. I'll teach you the first one, you do the second one. Okay, मैं first one आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग second one करना. इसमें they're asking what? They're asking you to find out 3 arithmetic means between 4 and 20.
अपन क्या सोचते थे कि अरिथमेटिक मीन इज वन वैल्यू, है ना, अरिथमेटिक मीन इज वन वैल्यू. It may not be one value because arithmetic mean is basically average or it means equidistant, है ना, एक दूसरे से equidistant. So what are they saying कि 4 है, बीच में मेरे को कितने arithmetic mean चाहिए, 3 arithmetic mean चाहिए. So 1 2 3 arithmetic means और फिर 20 आता. Got it? 4 है, बीच में 3 अरिथमेटिक मीन आएंगे, फिर 20 आएगा. क्लियर? सो दिस बेसिकली मीन्स कि 4 से यहां पे, यहां से यहां से, यहां से यहां से, यहां से यहां से सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. यस, इधर से इधर का डिफरेंस, 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 सब डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. यस, उसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंट, है ना, उसी को इक्विडिस्टेंट बोलते हैं. करेक्ट? Can I say this basically means this is an AP? इसका क्या मतलब हो गया? ये हो गया AP हो गया ये. Yes. So in an AP, if I want to find out the middle term, ये क्या है? First term. ये क्या हो गया? Second term, third term, fourth term और ये fifth term. Yes. मेरे पास I can find out the arithmetic mean. अच्छा, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को basically A2, A3, A4 चाहिए. Yes. A2, A3, A4 चाहिए, है ना. हाँ, मतलब इसमें 4 का टेबल है, समझ गया मैं वैष्णवी, बट आगे में नहीं होगा, इसीलिए मैं वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. ठीक है, तो सुनो, अभी मेरे को क्या चाहिए? आई वॉन्ट द डिफरेंस फर्स्ट. तो डिफरेंस कैसे मिलेगा मेरे को? आई नो दैट A5 माइनस A1, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल गिव यू 4 टाइम्स डिफरेंस. तो 20 माइनस 4 will give you the difference. So difference क्या हो गया? 4, right? The difference is of 4. That basically means अगर ये 4 है, add 4 to it, this is 8. Add 4 to it, 12. Add 4 to it, 16. Yes. So 8, 12, 16 are your arithmetic means between 4 and 20. ये आपको समझ में आया नहीं आया? Did you guys understand this? Yes, this is just an example. Next question यहाँ पे है, ये समझ गए ना सब लोग? Finding out arithmetic means between two numbers basically means finding out the terms in between, considering it becomes an AP. तो चलो ये वाला स्टार्ट करो फटाफट से, सेकेंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो. Do this real quick. सुमित, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सुमित, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो. All right, Ivanshi says 10.2, 13.4, 16.6, 19.8 and then 23. Superb. Others? Superb. Sumit, same answer. वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 23 है, बीच में कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है. यस, 1 2 3 4 एंड देन दिस. सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस बिकम्स योर 6th टर्म. यस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल गिव यू द नंबर ऑफ, इसका डिफरेंस जितना, कॉमन डिफरेंस, राइट? सो 23 minus 7 is basically what? 5 times D. तो D का वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा?
23 minus 7 is 16. 16 by 5 कितना हो गया? 3.2. तो बेसिकली वी वांट व्हाट? 3.2 का डिफरेंस थ्रू आउट. 7 पे प्लस 3.2 विल गिव अस हाउ मच? 10.2. उस पे 3.2 13.4. इस पे 3.2 16.6. इस पे 3.2 19.8. इस पे 3.2 23. So what are your arithmetic means between them? 10.2, 13.4, 16.6 and 19.8. Got it, everybody? Yes. I hope there isn't any confusion with this kind of a question, है ना? क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पुराने पेपर में आया हुआ है. There is a similar question asked in the previous paper, इसलिए मैं ये ध्यान से करा रहा हूँ. चलो, quickly try this. जल्दी गाइस, जल्दी करो ट्राई. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. लुक्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज देर आर वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. One. Shivraj says 1. Ivanshi says 0. शिवराज ये किस बात का सॉरी है? अच्छा, गलत आंसर दिया इसलिए? अच्छा, सोचा तुम सुधर गए. सुपर. हार्दिका, हाय आदित्य. एवरीबडी सेज बी. सुपर. So think of this logically. ठीक है, ये सब जाने दो, ये सब जाने दो. Think of this logically. Arithmetic mean between x and y क्या है? Arithmetic mean between x and y is what? First term last term by 2. Correct? x plus y by 2 है ना? तो I want ऊपर में x plus y, नीचे में 2. First focus on denominator. नीचे में मेरे को क्या चाहिए? 2 चाहिए. I want 2 in the denominator. The only possible way I can get a 2 in the denominator is if I plug in what as k? 0. Q? Because x to the power 0 and y to the power 0 will basically give us 1 plus 1, which is how much? 2. Now quickly check if k equal to 0 works for you. If k equal to 0 works, then done. तो ये क्या हो जाएगा? x k plus 1, that is 0 plus 1 is power 1, y plus 1 by 1 plus 1, 2. Are they equal? They are. Khatam. Yes. Chalo. Now let's move on to geometric progression. What we saw so far guys were just some of the questions or practice questions है आगे, but we may not be able to do them today. तो अपन वो विल डू इट सम टाइम इन दिस वीक इन अ स्पेशल क्लास. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आर यू ऑल रेडी विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? सब लोग रेडी है क्या? एक बार फटाफट से पानी वानी जो भी आपके पास ले लो. एक सिप. चीयर्स गाइस. चलो, let's look at geometric progression now real quick. Geometric progression में क्या होता है? Let's say if I say the first term here is 2
and I say the next term is 6. What is known by this? Can I find out the third term? Can I find out the third term here? What will be your third term in this? जल्दी बताओ अपना थर्ड टर्म क्या होगा. फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 6 है. व्हाट इज द थर्ड टर्म? Superb. It is going to be 18. Yes. Then the next term. So what is happening? The ratio between two consecutive terms is nothing but your common ratio. So here what is the common ratio? 6 by 2, which is 3. This common ratio gets multiplied throughout. तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? If I want the fourth term, basically what will I have to do? I will have to multiply either multiply to this fourth term can be written as 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 times, है ना? Which is 27 into 2, 54, or 6 multiplied by 3 2 times, 6 into 9, 54, or 18 multiplied by 3 once, which is what? 54. All the cases में क्या आ रहा आंसर? 54. समझ गए? Not 24 कृतिका, 54. Yes. Understood everyone? तो अगर मेरे को यहां पे इफ आई वांट द nth टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म में अपन ने क्या किया था? फर्स्ट टर्म को लेके फर्स्ट टर्म वी मल्टीप्लाइड विथ द कॉमन रेशियो 3. हाउ मेनी टाइम्स? फोर्थ टर्म में 3 टाइम्स किया, मतलब nth टर्म में n-1 टाइम्स रेज करेंगे उसको. दिस इज योर nth टर्म. गॉट इट? दिस इज योर nth टर्म. ठीक है, समझ गए? करेक्ट हेमा. a इंटू r टू द पावर n-1. फाइन. तो जैसे अपन प्रीवियस में अरिथमेटिक मीन में अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन डिफरेंस पे ड्वेल करते थे, यहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वी हैव टू ड्वेल ऑन द रेशियो. यस, उसको डिवाइड करके डील करेंगे. डन. तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म. हाउ टू फाइंड आउट योर nth टर्म इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, अभी चलते सम की ओर. सम, हाउ टू फाइंड आउट द सम. ठीक है, देखो यहां पे बिफोर वी गो फॉर द सम लेट मी टेल यू व्हाट ज्योमेट्रिक मीन इज. नहीं, यहां पे वो भी नहीं बैठेगा. ठीक है. Okay, let's say there are 3 terms in a geometric progression. Okay, 2, 6, 18. 3 terms है, 2, 6, 18. इसका sum मेरे को निकालना. What will be the sum? 2 plus 6 plus 18. Yes, which is 26. है ना? Now I have to figure out ये 26 कैसे आ रहा है. How are we getting this 26? Yes. So look at this. This is a. This is a into r. This is a into r square. है ना? इन सबको मेरे को ऐड करना है. I have to add this a plus r square. Yes, a plus r square. This will give me the sum. है ना? ऐसे करके. तो directly it becomes very difficult, but look at what we are doing. We are adding 1 1 1 to the exponent here. राइट, 1 1 1 करके अपन क्या कर रहे हैं? एक्सपोनेंट में ऐड कर रहे हैं. करेक्ट. सो हियर द सम बिकम्स व्हाट? सम ऑफ n टर्म्स इज a को अगर मैं कॉमन ले रहा, इफ आई टेक a आउट एज कॉमन, व्हाट हैपेंस? लुक एट दिस केयरफुली, ध्यान से देखो. दिस इज a प्लस a इंटू r प्लस a इंटू r स्क्वायर प्लस a इंटू r क्यूब, ऐसे करके a इंटू r पावर n-1 तक जाएगा ये. करेक्ट.
So what are we doing? Basically we're adding, a को अगर मैं common ले लूँ तो what happens? r, फिर r square, फिर r cube and so on, right? So you get r to the power n minus 1 by r minus 1. Got it? This is your sum of n terms in a geometric progression. Guys, समझ रहे हो? This is what? Sum of n terms in geometric progression. This works if r is greater than 1. If r is greater than or no greater than 1. अगर r equal to 1 है, अगर r equal to 1 है तो you will basically get n into n minus 1 by 2 वाला concept, right? Anyway, ये undefined हो जाएगा if r is equal to 1. ठीक है ना? क्योंकि फिर r minus 1 will become 0. Yes. फर्दर अगर r आपका छोटा है, मतलब इफ द सीरीज इज रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग सीरीज है, इफ r इज लेस देन 1 देन व्हाट हैपेंस? इफ r इज लेस देन 1 मतलब सीरीज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. इफ द सीरीज कीप्स डिक्रीजिंग, स्मॉलर 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 वैल्यू होते जाएगा, तो व्हाट वुड वी हैव? सॉरी, या व्हाट विल वी हैव? सेम कॉन्सेप्ट, just you will have 1 minus r power n by 1 minus r, क्योंकि फिर वरना सम नेगेटिव में हो जाएगा, है ना? वरना सम नेगेटिव में हो जाएगा. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये दोनों समझ में आ गया ना आप लोगों को? एवरीबडी? यस, नो, कुछ तो बोलो. डन? या ओके. तो अब यहां पे ध्यान में रखना है, इफ योर सीरीज इज इंक्रीजिंग तो आप ये लगाओगे, डिक्रीजिंग तो फिर ये लगाओगे. या व्हाट इफ, लिसन टू दिस केयरफुली, व्हाट इफ इन्फिनाइट सीरीज दिया है? What if they give you an infinite series, infinitely decreasing series? Yes, अगर infinitely decreasing series दिया मतलब n is equal to anything, n could be any value, we can't figure it out, अपन को नहीं मिल सकता, n infinity भी हो सकता है, right? So look at this, r to the power infinity is not defined, minus 1 will also be not defined, तो ये चला गया part, this entire part goes off. Yes, sorry, ये this entire part goes off. So what will you be left with? You will be left with sum of infinite terms is equal to first term divided by 1 minus r. Got it? r to the power infinity 0 रख लो. r to the power infinity, it's actually not defined but we can also understand it as 0, correct? Anything to the power infinity 0, है ना? तो यहाँ पे देखो r to the power infinity will become 0, 1 minus 0 is gone, नीचे 1 minus r रहेगा, so a by 1 minus r. Got it everybody? सबको आ गया समझ में? Yes guys, done. So these are 3 things that you will need for us to be able to answer the questions. तो चलो फटाफट examples करेंगे. Here's your first example. Quickly go ahead. Try करो जल्दी से. Here they're asking us to find what n is. N.
Superb. Ayush says B. Others? Very good, Ayush. बाकी लोग? इवांशी सेज बी. सुपर्ब. इसमें देखो बहुत बहुत सिंपल है लॉजिक. a1 is 2 which is 2 to the power 1. a2 is 1. 1 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 0. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 2 to the power -1, 2 to the power -2. ऐसे करके what is 1 by 128? 128 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, राइट? 1 by 128. Can I write 128 in terms of powers of 2? Of course. Which is how much? 2 power -7. Yes. तो basically just have to find कितने exponents है. Yeah. -7 से 1 तक 7 exponents. यहाँ पे 7, यहाँ पे 2. 7 + 2 9. दिस इज यूजिंग लॉजिक. ठीक है, ये लॉजिक से. फॉर्मूला से कैसे करोगे? हाउ विल यू डू इट? यूजिंग योर फॉर्मूला और स्टैंडर्ड मेथड से. फर्स्ट a2 is 1, a1 is 2, सो कॉमन रेशियो r क्या हो गया? 1/2. r becomes 1/2. यस. आपको an पता है. an क्या है? 1 by 128. Yes, all you have to find out is n now. What is an? Nth term is first term into r power n minus 1, है ना? तो an यहाँ पे क्या है? 1 by 128 is equal to 2 into r which is 1/2. 1/2 to the power n minus 1. तो ये यहाँ पे चला गया अगर, तो यू विल हैव 1/2 raised to the power n minus 1 is equal to 1/256. Yes. So you know that 256 is what? 2 power 8. है ना? 256 is 2 power 8. तो can I write this as 1/2 whole power 8? तो आपको क्या मिल गया? 1/2. Common base, you can equate the exponents. n minus 1 is equal to 8 or n is equal to 9. This is your standard method. Done. Logic say it is quicker, but you might have to be careful not to fall for traps, otherwise your standard method. Chalo, done na? All right, quickly try this. जल्दी से ये try करो. सॉरी, ये कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है. कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. ठीक है, करो जल्दी से ट्राई. क्विक गाइस. हेमा says D, आयुष says D. गलती से नोटा लिख दिया कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड के बदला. अच्छा, सबको पता चल गया. ये आधी नींद में क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे ही होगा. नहीं, आधी नींद में क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही होगा. डन. चलो, ग्रेट गाइस. हो गया सबका? हाउ अबाउट अदर्स?
देखो गाइज यहाँ पे क्या पूछा है, a1 into a2 all the way till a5, yes, but only a3 is given to us. अपने को सिर्फ a3 दिया हुआ है, right? We need common ratio to answer this, है ना? common ratio चाहिए ना आंसर करने के लिए. common ratio नहीं दिया हुआ है तो we cannot answer it. Is that true? हाँ, सुनो ध्यान से. Everybody who said option D, your answer is wrong. Everybody who said option D, your answer is wrong. ध्यान से सुनो, अभी किसका बर्थडे पता चल जाएगा. ठीक है, हाँ करेक्ट मिलन, सुपर. अपने को क्या दिया हुआ है, a3 का वैल्यू, दिस इज 4. यस, व्हाट हैपेंस हियर, लुक एट दिस. ये अगर 4 है तो ये क्या होगा, 4 से r डिवाइडेड, करेक्ट, 4 by r हो जाएगा ये. यस, और ये क्या हो जाएगा, 4 by r स्क्वायर. एग्रीड. ये क्या है, 4 into r. ये क्या है, 4 into r स्क्वायर. गॉट इट. ये समझ में आया सबको. इफ यू नो दिस टर्म, इससे आप प्रीवियस टर्म जाना चाहते हो तो क्या करोगे, इससे आप r डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, इससे फिर r डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा. सो 4 by r, 4 by r by r is 4 by r स्क्वायर. सेम वे यहां पे जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई. सो इफ यू मूव अहेड मल्टीप्लाई, इफ यू गो बैक डिवाइड, है ना. व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट. इसका प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर, आर स्क्वायर कैंसल, आर कैंसल, आर की जरूरत है अभी अपन को नहीं है. सो द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स इज व्हाट, a3 to the power 5. yes, a3 to the power 5. ठीक है. this concept brings us to geometric mean, but उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. ये फटाफट से सॉल्व कर लो. so this is what, 4 to the power 5 which is 2 to the power 10, that's nothing but 1024. बर्थडे मना रहे थे मेरा सुबह सुबह, क्या हो गया. बर्थडे मना रहे थे. चलो बर्थडे मनाया तो केक भी काट लो, फिर आओ काटो केक. ऑलराइट, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू ज्योमेट्रिक मीन. ध्यान से सुनो, ये ध्यान से सुनो. ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों को फूल करना इतना इजी है नहीं. थोड़ा सा एक्टिंग कर लो, थोड़ा सा गलती कर लिया कर लो, 1-2 बार अपने आप को कोस लो तो सब बोलेंगे डी है डी है. चलो ठीक है, लेट्स लुक एट दिस नाउ. ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या था, व्हाट वाज अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन वाज सम ऑफ टर्म्स बाय n, है ना. तो व्हाट इज द सम वेरिएंट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट. यस, तो ज्योमेट्रिक मीन इज प्रोडक्ट. डिवाइड का वेरिएंट यहां पे क्या हो जाएगा, रूट. यस, तो यहां पे nth रूट. प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स रेज टू द nth रूट, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन. यस, और एंड ऑल्सो लिसन टू दिस, ज्योमेट्रिक मीन in a geometric progression, geometric mean is the same as your median. समझ गए. geometric mean is the same as the median. Hi Pawan, good morning. समझ गए. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन और मीडियन सेम होता है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन सेम है. यस, तो अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स चाहिए, व्हाट विल आई डू, आई विल रेज ज्योमेट्रिक मीन टू द nth पावर. करेक्ट, आई विल रेज ज्योमेट्रिक मीन टू द nth पावर. यहां पे मीडियन क्या है, a3, क्या है 4.
So product of n terms or product of 5 terms is basically equal to a3, which is 4 geometric mean raised to the power 5. 1024. I hope you guys understood this. ये आपको समझ में आ गया ना geometric mean का concept? Have you understood, guys? Everybody send a yes if you've understood it. जल्दी से yes भेजो, वीडियो पे लाइक करो और फिर आगे बढ़ेंगे. Yeah, चलो, beautiful. Quickly try this now. Let's try this. Are you guys doing this? Try कर रहे हो क्या आप लोग? Yes, no? ठीक है, करो, ट्राई करो. नहीं हुआ अभी तक. टाइम अप हो चुका है गाइस. ठीक है, सुनो. वेरी सिंपल क्वेश्चन. A1 दे दिया आपने को. A1 इज व्हाट? 4374. A2 भी दे दिया है. A2 इज व्हाट? 1458. यस. अपन नॉर्मली क्या करते हैं? अपन नॉर्मली वी वुड टेक द डिफरेंस इन अरिथमेटिक मीन, बट ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन में. सो इफ आई डिवाइड देम आई विल गेट द कॉमन रेशियो. यस. तो A2 बाई A1 विल गिव मी कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो कितना है? 1458 बाई 4374. दिस इज वंस, दिस इज थ्राइस. तो कॉमन रेशियो इज 1/3. डन. यस, कॉमन रेशियो क्या है? 1/3. सॉर्टेड. अभी अपने को n चाहिए. n का वैल्यू अपने को नहीं पता. वी नीड दिस n. यस. व्हाट इज गिवन टू अस? दैट लास्ट टर्म इज 2. द लास्ट टर्म हियर इज व्हाट? 2. यस. सो इफ लास्ट टर्म इज 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 4374. यस. तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा? इफ आई डिवाइड दिस
If I divide this, what will I get? I'll get the value of r raised to the power n. Yes or no? an क्या है? an is a into r raised to the power n minus 1 by a1 क्या है? a. करेक्ट. ये अगर कैंसिल हुआ तो what will I get? I'll get r raised to the power n minus 1, है ना? I'll get r raised to the power n minus 1 यहाँ से. तो ये कितना हो गया? This is ones, this is 2187, correct? 1 by 2187 is basically r raised to the power n minus 1. r क्या है? 1 by 3. So 1 by 3 raised to the power n minus 1 is equal to 1 by 2187. 2187 अगर आपको पता है, if you know what 2187 is, 2187 is equal to 3 to the power 7, है ना? Correct, Ayush, super. So this is 1, so can I write this as 1 by 3 raised to the power 7? 1 by 3 raised to the power n minus 1 is 1 by 3 raised to the power 7. बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लो. n minus 1 is 7, n is equal to 8. Yes. अब अपने को क्या चाहिए? Now what do we want? We want the sum of these terms, a1 plus a2 plus all the way till an. Sum चाहिए अपने को, sum. Sum of n terms when r is less than 1. r is less than 1 ना, 1 by 3 0.33 less than 1. Yes. क्या है? a into 1 minus r power n by r minus 1 बराबर a क्या अपना 4374 into 1 minus n क्या है 8, 1 by 3 raised to the power 8. Yes, whole divided by 1 minus r है, r minus 1 नहीं है, 1 minus r, 1 minus 1 by 3. Cool. तो ये क्या हो गया? दिस विल गिव यू सम ऑफ n टर्म्स. अब आप कैलकुलेशन कर लो, जैसे कैसे करना है कैलकुलेशन कर लो. दिस इज 2 by 3, ये 2 by 3 है आपका, ये हो जाएगा. इफ यू कैंसल दिस आउट, दिस विल बिकम 2187, राइट? सो 2187 into 3, yes, is basically this multiplied with 1 by 3 power 7. अगर 2187 है तो 3 power 8 कितना हो जाएगा? 3 power 8 will become how much? 1 6 5 6 5 6 1. Yes, this will give you your answer. That's it. 6 5 6 1 multiplied by 6560 by 6561. ये हो गया कैंसिल. योर आंसर इज व्हाट? 6560. डू यू गाइस गेट दिस? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. समझ गए ना सब लोग? यस नो कुछ रिस्पॉन्स? डन. चलेंगे नेक्स्ट. शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो जल्दी करो फटाफट. क्विकली डू दिस. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है. दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन हैज कम अ लॉट ऑफ टाइम्स. Quickly try this.
ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, एंड नॉट ओनली इन कैट, अदर एग्जाम्स एज वेल. Milan says B. Others? So चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ब्रेकिंग अ स्वेट. लिसन टू मी केयरफुली. इसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है. देयर इज अ वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. मैं अभी एक्सप्लेनेशन देके बोर नहीं करूंगा. विल डू द एक्सप्लेनेशन इन द स्पेशल क्लास. ठीक है, डू द एक्सप्लेनेशन इन द स्पेशल क्लास विच विल हैपन टुमारो. तो ये रहा इसका फॉर्मूला. इफ यू हैव a term in the series k so on, n terms like this, then the sum of n terms, yes, listen to this carefully, then the sum of n terms is k divided by 81 into 10 to the power n plus 1 minus 10 minus 9n. This is your standard form. ये फॉर्मूला नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए देन कम टुमारो इन द स्पेशल क्लास. ठीक है, समझ रहे हो आप लोग गाइज? यस, नो, या इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बट यहां पे नहीं, बोर हो जाओगे आप लोग. तो व्हाट इज द सम ऑफ 11 टर्म्स देन? के, यहां पे के क्या है? 2 है ना, क्योंकि 2 2 2 2 2 2 ऐसे चल रहा है ये. सो के इज 2 विच इज 2 by 81 into 10 to the power 11 plus 1 12 minus 10 minus 9 into 11. This gives us how much? 2 by 81 into 10 to the power 12 minus 99 minus 99 minus 10 is how much? 109. This is your answer, which is what? Option A. Got it? Correct, Milan. Done guys, everybody? ये आ गया क्या समझ में आप लोगों को? यस, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. आई एम नॉट सेइंग आई वोंट, बट यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग बोर हो जाओगे. सो आई विल गिव इट टू यू देयर इन द स्पेशल क्लास, जो कल होगा. मैं आपको टाइम बता दूंगा. आई लेट यू नो द टाइम लेटर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्विकली ट्राई दिस. Correct, Milan. If you're looking for more practice content, अगर आपको practice के लिए और चाहिए तो if you can get NCERT 11th standard,
उसमें आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यू कैन यूज दोज फॉर प्रैक्टिस. उसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हो गए, वो जाने दो. लेट गो द प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, बाकी सब आप ट्राई कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करना ही है तो. जल्दी करो गाइस. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. What will be the sum of the series? 90, 60, 40 and so on. Very good, Milan, Ayush, superb. Say A, 270. Others? Bharat says 270. Rishikesh says 180. Hema, Hardika say A. Okay. So what is this? Always look at it. This is a decreasing GP and they are not giving the last term. If they are not giving the last term, if nth term is not given, n is not given, it basically means what? That they're looking at an infinitely reducing series. Yes, infinitely reducing series. तो उसका sum क्या है? Sum of n terms, जहाँ पे n अपने को पता भी नहीं है. So n is what? Infinity. Sum of infinity terms is equal to a by 1 minus r. Yes. a क्या है? First term 90. r क्या है? 60 by 90 which is 2 by 3. 90 by 1 by 3. This gives us what? 90 by 2 by 3 which is sorry 2 by 3. क्या करते हैं? This is 2 by 3, this is 1 by 3. So 90 into 3, 270. Done? Got it everybody? Super. चलो जल्दी से करो ये वाला. Quickly do this. Let's get this over with. बहुत ही easy question है. जल्दी करो गाइस. मिलन सेज डी. डी है इसका सम. इंफिनिटी. इंफिनिटी है इसका सम. आर यू श्योर? Hema says A minus 1 by 4. Rishikesh says A. Hardika says A. Correct, Milan. This entire question is a trap, guys. Entire question is a trap. थोड़ा सा लॉजिकली सोचो यहाँ पे. ये सीरीज क्या हो रहा? It's not decreasing, it is increasing. It's be getting multiplied by 2. 1 by 4 into 2 is 1 by 2. 1 by 2 into 2 is 1. Yes. So this is an infinitely increasing series है. उसका sum
of infinite terms you cannot really find. Yes, cannot be determined होगा या infinity होगा उसका आंसर. समझ रहे हो? Yes. And moreover these are all positive terms. ये सारे positive terms हैं. इन positive terms में आप कैसे negative sum आएगा? थोड़ा समझाना मेरे को. How will the sum be negative if the series is entirely positive? हाँ? This is your answer. थोड़ा सा अच्छा ठीक है, इसी में लॉजिक लगा लो कि नेगेटिव नहीं हो सकता सम, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है. बाकी क्या बचता है? 1 3/4. बाकी क्या बचता है? 1 3/4. 1 3/4 तो इसी का सम हो गया. 1/4 plus 1/2 is 3/4. 3/4 plus 1 is 1 3/4. 1 3/4 तो इसी का हो गया. इसके बाद ये और इंक्रीज होगा ना. So this is also not possible. What is your only answer possible? Infinity. That's it. Got it? Yes. Sum of all natural numbers कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको लास्ट टर्म ही नहीं पता. You don't even know the last term. n आपको नहीं पता. This is going all the way till infinity. Yes, could be anything. 5 terms, 10 terms, 20 terms, 30 terms, किसी को भी नहीं पता ये कब एंड होगा. Cool? हाँ, बस नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. करो नेक्स्ट जल्दी. Quick, try this. Sum of all natural numbers is -1/12. क्या बोल रहा हूँ? आयुष क्या हो गया भाई? नींद की थी जरूरत. Sum of all natural numbers is -1/12. Ramanujan summation. उन बेचारे को क्यों टेंशन दे रहे हो? क्या कुछ भी बोल रहे हो? I never knew this. What is this? I'll have to read on this. इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा मेरे को. Logically it doesn't make sense at all. चलो ये वाला ट्राई करो फटाफट. डन. नहीं हुआ क्या? कि हो गया? ठीक है, करते हैं इसको.
So there are three terms A, B, C. Yes, three terms है GP में A, B, C. A फिर B फिर C इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इफ देर आर थ्री टर्म्स तो मीडियन क्या हो गया, मिडल टर्म, विच इज ऑल्सो योर ज्योमेट्रिक मीन. यस, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया. तो इफ दिस इज B, यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स विल बेसिकली बी ज्योमेट्रिक मीन रेज टू द पावर 3, है ना, ये अपन ने डिस्कस किया था, विच इज व्हाट B क्यूब. अपने को दे दिया प्रोडक्ट है 1728. यस, B क्यूब इज 728, तो B क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1728. दिस हैज टू बी 12. 144 इंटू 12 इज 1728, है ना, खत्म. B का वैल्यू मिल गया अभी, वी गॉट B का वैल्यू. Yes, now what's the next step? We know this is B. B का वैल्यू क्या है, 12. Yes, तो can I find A plus C इसमें से? A plus C क्या हो जाएगा, 38 minus 12 which is 26. A plus C का वैल्यू मिल गया 26, B का वैल्यू अपने को पता है is 12. So from here what do we need? We need only A plus B. Yes, अपने को सिर्फ A plus B का वैल्यू चाहिए. That means we want a possible value of A. We want a possible value of A. तो क्या अपने को पता है? अपने को पता है that A plus C is 26. A into C is what? 1728 by 12, which is 144. Correct? Factorize कर सकते हो? Can you factorize here, guys? Yes, no? Will you be able to factorize this? Product 144 है, sum क्या है, 26. Yes. So what is it? 18 into 8, है ना? A will be 8, C will be 18. Why? Because C is a greater value. C is a greater value than A, तो हो गया factorizing. Yes, तो अपने को A का वैल्यू भी मिल गया, C का B का वैल्यू भी है, so A plus B is basically 8 plus 12 which is 20. इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. This question should not take this long. Done? इसमें आपको यू डोंट रियली हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो. आपको कॉमन रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. यस, कॉमन रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अगर इफ़ यू आर इंसिस्टेंट ऑन फाइंडिंग इट, कॉमन रेशियो इज व्हाट, इट इज 12 by 8. यस, विच इज 3 by 2. डन. Clear? Yes guys, everyone? So here we are using the logic of geometric mean to reduce the calculation. Cool. Chalo. Now let's quickly move on to harmonic progression. Yes. Let's look at harmonic progression. Harmonic progression क्या है? See, look at this. If I say the first term of a harmonic progression is 1 by 3, the second term of an harmonic progression is 1 by 8, तो third term क्या होगा? First term 1 by 3 है, second term 1 by 8 है, third term क्या होगा? जल्दी बताओ. Quick. Anybody? So what is harmonic progression? If I say there are a few terms, let's say A1, A2, A3 are in harmonic progression, that means the reciprocal of these terms 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 and so on should be in arithmetic progression. Yes, should be in
arithmetic progression. So this is what? Correct. Your next term will be 1 by 13. How? Look at this. 1 by 3, 1 by 8 harmonic progression में है, मतलब उनका reciprocal 3, 8 should be in arithmetic progression. Yes, तो यहाँ पे 5 का difference, next 5 का difference is 30. Yes, next 5 का difference is 18. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 by 18. Getting it? So if I want you to find the 100th term of a harmonic progression, what will you do? Find out the AP, find out the common difference, find out the 100th term in the AP, just take the reciprocal of it, done. Yes, तो 100th term of the AP का 100th term क्या होगा? 3 plus 99 times 5, है ना? 99 का difference है, and first term is 3, common difference is 5. This is how much? 498. उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे को HP का हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म मिलेगा 1 by 498. डन. तो nth टर्म क्या है? nth टर्म बेसिकली क्या है? योर nth टर्म इज ये फर्स्ट कन्वर्टेड. सो लेट्स नॉट हैव अ स्टैंडर्ड वे ऑफ इट. स्टैंडर्ड वे नहीं करेंगे, लॉजिक से ही करेंगे. व्हाट आर द स्टेप्स? फाइंड आउट द AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो, रेसिप्रोकल निकाल के. फाइंड आउट nth टर्म ऑफ AP, देन फाइंड द रेसिप्रोकल. दैट्स इट. यस, तो इफ आई से दिस इज 1 by A1, 1 by A2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 by AN. That's it. Yes. Is there a way to find out the sum? Is there a way to find out the sum? Standard way कोई formula नहीं है, but बहुत ज़्यादा complex है and it will not help you at all. Yeah. तो sum of n terms of harmonic progression भूल जाओ, जाने दो. Yes, जाने दो. Yeah, but let's talk about harmonic mean. Although harmonic mean, yes, what do you mean by harmonic mean? Harmonic mean क्या होगा यहाँ पे? So look, harmonic mean के लिए if you have two terms, right? Harmonic mean is basically just sum of the terms and so, but then in what order? 1 by. So अगर दो term है A and B, right? If you have two terms A and B, then you're basically doing what? You're adding 1 by A plus 1 by B, and then उसको आप 2 से divide कर रहे हो. I mean divide that with 2. Got it? So 2 by क्या हो जाएगा ये? A plus B by AB. This will give you 2 times AB by A plus B. समझ रहे हो हार्मोनिक मीन कैसे काम करता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मीन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स बाय रेसिप्रोकल ऑफ दोस टर्म्स. ठीक है? आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. यस, चलेंगे आगे. चलो क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन. जल्दी से ट्राई कर लो ये वाला. क्विक गाइस. जल्दी करो ट्राई ये वाला.
कर रहे हो क्या आप लोग? क्या हुआ गाइस? ओके, आयुष says B. So it might look like, this question might feel like ये नहीं हो सकता. It might feel like ये नहीं हो सकता, but ये actually easy question है. What we need to understand is A1, A2 all the way till A11 harmonic progression में. ये सब harmonic progression में है. ये नहीं, these aren't harmonic progression. अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1/A1, 1/A2, 1/A11 ये क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया. यस, दिस जस्ट मेक्स आवर जॉब इजी. गेटिंग इट? ये सब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. 1/A1, 1/A2 ऑल द वे टिल 1/A11 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अपन क्या करेंगे अभी? 1/A1 लेट्स कॉल इट एज T1. ठीक है, 1/A1 को T1, 1/A2 को T2 ऐसे बुलाएंगे. तो व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ T1 प्लस T2 प्लस ऑल द वे टिल T11 इज हाउ मच? 110. ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब इसका मीडियन वही एवरेज होगा, which is what? Sixth term. Sixth term is the average. 5 term on the left, 5 on the right. This into number of terms 11 is 110. तो sixth term क्या हो गया? 10. Yes, but mind you guys, 10 क्या है? 10 is 10th sixth term of AP. अपन से क्या पूछा है? sixth term of the harmonic progression. So 1/A6 is basically T6, which is nothing but 10. तो 1/A6 अगर 10 है तो A6 क्या है? 1/10. समझ गए? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है ना? आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है. या लास्ट जल्दी. जल्दी करो गाइस, खत्म होने को है सेशन. Any answers yet? नहीं? हो रहा क्या? ये दोनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में,
These are in harmonic progression. This is a part of the harmonic series. So again, consider A6 in the harmonic series. Yes, arithmetic series में क्या हो जाएगा 1 by A6 है ना. Let's call this as T6. Same way 1 by A11 को let's call it as T11. तब क्या है ये T11 is equal to 1 by 18. T6 is equal to 1 by 10 है ना. दोनों का डिफरेंस मेरे को क्या देगा? If I subtract them, I'll get 5 times the difference. So 5 times the difference is what? 1 by 18 minus 1 by 10. Getting it? 1 by 18 minus 1 by 10. I know this will come in negative. ये नेगेटिव में आएगा, which is okay, don't worry. तो ये कितना हो गया? Let's say the LCM is 90. So this is 5 minus 9, 4 minus 4 by 90. Yes, or minus 2 by 25, जो भी 45. This is what? 5 times D. If 5 times D is this, then what is D? D is equal to minus 4 by 450. Correct? यार है समझ में आप लोगों को? Are you guys able to understand this? Yes, no? अपने को क्या चाहिए? वी वॉन्ट A16. तो 5D से ही काम चल जाता है, इसकी जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड दिस. वी वॉन्ट A16. यस, A16 क्या होगा? 1 by A16 ढूंढ सकते हैं अपन बाय फाइंडिंग आउट T16. यस, व्हाट इज T16? T16 इज बेसिकली T11 प्लस 5 टाइम्स D. यस, T11 क्या है? 18. 1 by 18. 1 by 18 प्लस 5 टाइम्स D ढूंढना है. यस, विच इज हाउ मच? 5 टाइम्स D इज minus 4 by 90 है ना. minus 4 by 90. तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल बिकम 5 by 90 minus 4 by 90 is 1 by 90. खत्म. If T16 is 1 by 90, then you need what? You need A16. So if this is 1 by 90, then A16 is how much? 90. Reciprocal of 1 by 90. 90. खत्म. I hope you guys understood all of this. अभी तक अपन ने जो भी बात किया आप लोगों को समझ में आ गया है ना? नहीं मिलन. करेक्ट. एंड मोर ओवर दीज आर इन हार्मोनिक सीरीज. ये हार्मोनिक सीरीज में है. यस, ये हार्मोनिक सीरीज में है, ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है. तो इसमें आपको ज्योमेट्रिक मीन नहीं मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मिलन. हार्मोनिक सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मतलब यू विल हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम एंड देन टेक आउट द रूट, और वो मीडियन वैल्यू नहीं रहेगा. बस आपका अच्छा टाइम चल रहा, आपका अच्छा टाइम चल रहा और कुछ नहीं. यस, ओके गाइज, आई होप यू गाइज हैड फन इन टुडेज सेशन. अपना अभी तक AGP रह गया है विच वी विल डू इन अ स्पेशल. यस गाइज, दिस पार्ट ऑफ द सेशन इज डन. आगे का ये मैराथन है राइज लाइक अ फिनिक्स, ये यहीं से कंटिन्यू कर लो आप नेक्स्ट सेशन में. 9 AM से लेके 11 AM तक हरप्रीत मैम लेंगी. हरप्रीत मैम विल बी टेकिंग वर्बल के लिए. राइट, दिस इज अ प्रैक्टिस मैराथन. मैं क्वांट के लिए मैं आऊँगा फ्रॉम 11 AM to 2 PM. यस, तो आई विल सी यू गाइज एट 11 AM, बट प्लीज गो अहेड एंड वॉच हरप्रीत मैम सेशन एज वेल. ठीक है, फिर आगे का स्केड्यूल आपको पता ही है.
आगे 4 PM to 7 PM previous year questions करेंगे अपन, and then we will do our regular session from 8 to 9. Yes. Guys, if you really want to step up your CAT preparation, हाँ सब कुछ YouTube पे ही है आयुष, आज सब कुछ YouTube पे ही है, everything on YouTube. If you want to step up your CAT preparation, then join in one of these batches. ये कल ही चालू हुआ था. This is a working professional batch, and you can also become a part of the combat where you could get a chance to win a 6-month subscription or a 1,000 rupees Amazon voucher. This is happening tomorrow 12 PM to 1 PM. Use my referral code Surana Live to unlock the test. And if you're planning on taking your plus subscription, अपना CAT preparation को ऊपर करना चाहते हो, then all you need is one of these. Here in the plus you have all of these best educators in the country, unlimited access to all live classes, you get structured courses and full PDFs. That means you need not buy any books separately. प्रैक्टिस के लिए, थियोरी के लिए सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस विल बी देयर. दैट मीन्स नो नीड टू बाय मॉक पैकेज एनीवेयर सेपरेटली. मोरओवर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल कोच हु विल हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, टेस्ट प्रेप में, एडमिशंस के टाइम, GDPI फुल प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग के टाइम, देन यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक, जहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा. देयर विल बी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्टैंड अलोन बैचेस. यू कैन कंसिडर दिस. ठीक है. हियर आर द प्राइजेस फॉर प्लस, हियर आर द प्राइजेस फॉर आइकॉनिक. प्लस में द मोस्ट प्रिफर्ड कोर्सेज आर 12 months and 24 month one. आप इफ यू यूज माई रेफरल कोड सुराना लाइव, द प्राइजेस विल बी स्लैश्ड. मतलब 12 months का समवेयर अराउंड 15,000 पड़ेगा, एंड 24 months का समवेयर अराउंड 18,000 पड़ेगा. यस. ऑन द अदर हैंड इफ यू आर लुकिंग फॉर आइकॉनिक, आइकॉनिक में सिर्फ 2 है, 12 months and 24 months वन. स्टिल इस पे यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ यू यूज माई रेफरल कोड, है ना. तो 30,000 का इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 27,000, एंड 41,000 का इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 37,000, 36,000 समथिंग. ठीक है. यस. तो अगर आपको लेना है गाइज, देन क्विकली स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, राइट. अ लॉट ऑफ न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग. आई माई सेल्फ एम स्टार्टिंग न्यू बैचेस आगे के लिए, राइट. आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड विद द टाइम, अनाउंसमेंट करूंगा मैं उसका. यस. चलो गाइज जाओ मस्त. Next class, I will see you here on this channel only at 11 AM with a good set of questions for our practice. Until then, keep yourself safe and happy guys. I'll see you all real soon. जाओ मस्त नाश्ता वाश्ता कर लो, हरप्रीत मैम का सेशन देख लो. I'll see you guys at 11 AM. Bye guys. Keep learning. Let's crack it.